balancing spirituality, mental well-being, and career success. So we have a lot of youngsters here on stage, in the audience. और आज का यंगस्टर या कोई भी ये जरूर क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं या जो भी स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं या राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं या रामायण महाभारत पढ़ते हैं, तो व्हाट इज इन इट फॉर मी? सम प्रॉब्लम? व्हाट इज इन इट फॉर मी? अब मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं भी यही सोचता हूँ कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कुछ तो होना चाहिए। तो हम यही आज डिस्कस करेंगे, सब हमारे तीनों जितने भी डरेंट पीपल हैं, कि हम स्पिरिचुअलिटी, मेंटल वेलबींग और करियर सक्सेस को कैसे हम इक्वेट करते हैं, इसमें क्या सामंजस्य है और इसको किस तरह से हम एक सक्सेसफुल लाइफ बना सकते हैं। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन विल बी कि एक ऑफ्ट रिपीटेड फ्रेज है, आई एम नॉट रिलीजियस, आई एम स्पिरिचुअल। तो ये रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में क्या फर्क है, ये सब लोगों को मैं बोलूँगा। पवन जी प्लीज, गुरु जी आप थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें। देखिए, रिलीजन का एक बहुत स्पष्ट मीनिंग है, इसलिए दुनिया में कुछ रिलीजन है, कुछ रिलीजन नहीं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी सभी रिलीजन्स में है। रिलीजन का मतलब है टू गेन आवर अगेन, इसको हम रिलीजन बोलते हैं। रिलीजन का मतलब पंथ से भी नहीं लेना चाहिए, धर्म से तो बिल्कुल भी नहीं है। तो रिलीजन का मतलब होता है स्वयं को दोबारा पाना, और स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है टू बी गुड, टू डू गुड, टू बी गुड एंड टू डू गुड। ये दोनों चीजें जब जिस व्यक्ति में मिल जाती हैं वो स्पिरिचुअल हो जाता है। बाकी जो सारी चीजें हैं वो उसको सपोर्ट करती हैं। कैसे? अच्छा होना कोई आसान बात नहीं है, वो भी आज के युग में अच्छा होना बहुत मुश्किल चीज है। इतनी सारी बुराइयां हमारे चारों तरफ घूम रही हैं, कभी तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि हम किस चक्कर में फंस गए। तो अच्छा हो, इसके लिए हमें कुछ प्रैक्टिसेस करनी होती है। जैसे ईशावास्य उपनिषद लिखता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखोगे तो ईश्वर पे कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि ईश्वर अंदर है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें ये सपोर्ट करती है, ये स्पिरिचुअलिटी क्रिएट नहीं करती है। आप राम रक्षा स्तोत्र पढ़ेंगे, ये आपको सपोर्ट करेगा, उस पावर के लिए सपोर्ट करेगा। आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो ये आपके अंदर उस पावर को डेवलप करेगा, जिससे कि आप अच्छे और बुरे में फर्क कर सके और अच्छाई का साथ दे सके, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। कभी कभी देखा होगा आपने कि कुछ लोग बहुत अच्छे हो जाते हैं, जब वो अच्छे हो जाते हैं तो वो अपने एक छोटे से कंपार्टमेंट में लिमिटेड होते चले जाते हैं। ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। आपको अच्छाई का साथ देना होगा, आपको सच के साथ खड़ा होना होगा, उसके लिए दिलेरी चाहिए। वो दिलेरी आप अपने ईश्वर से प्राप्त करते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। तो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में ये फर्क है। स्पिरिचुअलिटी आत्मा से आती है, आत्मा के लिए होती है, आत्मा के उत्थान के लिए होती है। और रिलीजियसिटी जो है ये एक व्यक्ति के द्वारा या एक धार्मिक पुस्तक के द्वारा स्वयं को पुनः पाने का एक अभ्यास है, एक प्रयास है। First, apologies to all of you for starting late. I think we were late by 15 minutes, so pardon us that delay. Our flight got delayed by an hour. To me, the difference is simpler. Religion is an idea, spirituality is an experience. If you want to become a swimmer, you can't take a correspondence course in swimming. Right? You can't stand in front of a mirror and act that you're in. You have to go into the pool. Similarly, if you just sit and chant, there is not so much of a likelihood of spiritual evolution. The same way that you practice swimming or cricket or handwriting or typewriting, whatever, that same practice you have to do to have spirituality as an experience. Religion is otherwise just a thought. In the same way that to me truth is an idea, reality is reality.
We are all sitting here. Some of us are feeling cold, some of us are not feeling cold, some of us can hear me clearly, some of us cannot hear me clearly. All of that is reality. But when you say truth, it's an idea. I don't know what truth is. I know what reality is. I can experience it on a day-to-day basis, on a moment-to-moment basis. Society is an idea. Individual is reality. I can see him nodding his head. When somebody comes and says, society said so, I don't know who it is. Maybe two mamas or two chachas, that's all that boils down. So these, to me, the fundamental difference is between an idea and reality. So idea and experience. So, to me, if you are talking about spirituality, then you have to practice it. Like he's saying, acha hona. There will be barriers. Because the reality is that all of us know anger, we know fear, we know frustration. We don't know the other side. Now, unless you sit down and practice knowing that other side, there will be no spirituality. Very beautiful person. God bless. Rajan sir, थोड़ा सा Thank you. Wonderfully, both the panelists, my co-panelists have put their thoughts about the question of religious and spirituality, religiousness and spirituality. If you ask me, my discipline is mathematics and statistics. If I had to put it, the difference between the two, I will put it that the circumference, if you draw a circle, that circumference is religiousness and the center is spirituality. very good. And the center is included, the center, if you just compare between the two, the center is included in that, it is in the center. But in the center, this religiousness is not included. And if you understand it mathematically and from the practical point of view, then there is one proverb in Chinese. Chinese में एक proverb है. साइक्लोन जब आता है तो लोग वो जैसे जैसे साइक्लोन बढ़ता है लोग दूर दूर जाते हैं, है ना, कि चलो इससे बचते हैं, लेकिन the speed of that cyclone and your speed doesn't match, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा होती है तो आपको ले लेता है अंदर. And therefore that Chinese proverb is, don't run away, try to reach the center, and center is the safest place. If you understand scientifically, you go to the center and then you are safe. अब वो सेंटर में पहुंचने के लिए आपको जो प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है, which every religion which has understood the concept of universe, I am not saying A religion or B religion or C religion, the religion which has understood the concept of universe, they only can tell you the right kind of practices to reach out to the center. जो religion में tradition and एक फॉर्मेट बना दिया है कि यही सही है, यही सत्य है. गैलीलियो की कहानी हमने सुनी है, and then we have seen what kind of problems which the whole world has faced. Universe is always expanding, and when universe is always expanding, a new knowledge is created. Unless and until we bring that new knowledge and new practices, we will not be able to reach out to that center. That is the difference between, to me, whatever I have understood, that is the difference between spirituality and religiousness. वो religiousness का जो circumference है उसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं, है ना? जब हम बढ़ाना चाहते हैं
तब हम इंक्लूसिव बनते हैं. Increase the circumference, increase the size of the circle to include people. When you include the people, then only it may help you to reach out to that spirituality through various practices which people in all religions they have defined. जब वो कंपैरिजन आता है ना, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसी, तब आप स्पिरिचुअलिटी तक पहुंच ही नहीं सकते हैं. और सारे हमारे पॉलिटिशियन दुनिया के हमें वही ले जा रहे हैं और हम व्हाट्सएप के माध्यम से वही घूमते रहते हैं सर्कमफरेंस पे. दैट इज वेयर द विजडम फ्रॉम विच पीपल इज गोइंग टू हेल्प ऑल ऑफ यू, which helped me. So I think it will help all of you. Thank you. Thank you. बहुत ही सुंदर मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया सर. ये शायद हमारे में से कई लोगों के लिए नया ही एक्सप्लेनेशन रहा. तो रिलीजन में जो समझ में आता है कि एक राह हो सकती है, एक तरीका हो सकता है, पर पहुंचना हमें उस सेंटर पे ही है जो which is जो सब लोगों के ध्येय एक ही है. राहें अलग अलग हो सकती हैं. तो एक राह योग भी है और योग शास्त्र गीता का भी पाठ है. कृष्ण को भी योग गुरु कहा गया है और हम सब लोग जितने यहाँ बैठे हैं कई कोई ना कोई तरीके से योग प्रैक्टिस करते ही हैं. कोई अष्टांग योग बोलते हैं, कोई अलग अलग नामों से बोलते हैं. गुरुजी का भी एक योग बहुत सुंदर पढ़ाते हैं. तो ये मैं पूछना चाहूँगा कि योग भी एक साधन है पहुँचने का. योग को आप स्पिरिचुअल वेलबींग बोलेंगे या खाली व्यायाम का तरीका बोलेंगे, या करियर के लिए जो यहाँ यंगस्टर्स हैं उनके करियर के लिए योग कितना हेल्पफुल है और क्या उन्होंने वो रोज करने से क्या फायदे वो सोच सकते हैं उनको मिलेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है. लेट अस अंडरस्टैंड द रियल इंटेलेक्चुअल मीनिंग ऑफ योग. योग का मतलब दुर्भाग्य से बहुत बदल गया है. व्यायाम बन गया, आसन भी नहीं, व्यायाम बन गया. योग फिलॉसफी के प्रणेता है पतंजलि ऋषि और उन्होंने अष्टांग मार्ग खोजा था. अष्टांग मार्ग उन लोगों के लिए नहीं है जो बहुत विद्वान या अवतारी पुरुष कहे जाते हैं. अष्टांग मार्ग उन लोगों के लिए है जो अब से एक ऐसा जीवन प्रारंभ करने जा रहे हैं जो प्रभु तक जाता है. तो प्रभु से जो हमारा मिलन है, आप चाहे सगुण प्रभु में विश्वास करें, चाहे निर्गुण साधना में विश्वास करें, चाहे आप द्वैत अद्वैत किसी भी साधना में आप अपने को पारंगत करना चाहते हैं, योग उसके लिए है. केवल शरीर को साधना योग नहीं है, क्योंकि शरीर साधने से आपका मन सद जाए, इंद्रियां सद जाए, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है. क्योंकि बहुत सारे ऐसे योगाचार्य हुए हैं जो मन और इंद्रियों को नहीं साध पाए. तो ऋषि पतंजलि का जो कॉन्सेप्ट है योग, वो हमें प्रभु की तरफ लेके जाता है. उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने प्रैक्टिस बताई है ईश्वर प्रणिधान. यानी सब कुछ ईश्वर को आप सब सरेंडर कर दो. अब ये बहुत कठिन है. अब कहते जरूर है सब कुछ ईश्वर का है, लेकिन जब करने का मौका आता है, क्रेडिट लेने का मौका आता है, तुरंत आगे हो जाते हैं कि हम कर रहे हैं या आई डिड इट. यही चीज हमको छोड़नी होगी और जिस दिन हम छोड़ देते हैं हम निडर हो जाते हैं. निडर हो जाते हैं तो हमारे अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ने लग जाती है और हम एक प्लान वे में धीरे धीरे आगे इसलिए बढ़ पाते हैं क्योंकि हमारे ब्रेन को जितनी ऑक्सीजन चाहिए, हमारे ब्रेन को जितना थॉट प्रोसेस चाहिए, हमारे ब्रेन को जितनी फिलॉसफी और प्लानिंग चाहिए, वह सब मिलना शुरू हो जाती है. इसलिए जो यम से शुरू हम करते हैं, यम यानी शरीर को साधते हैं, अपनी दिनचर्या को साधते हैं, अपने बैठने को साधते हैं, अपने आहार को साधते हैं और सब कुछ ईश्वर को सौंप देने के बाद फिर कहीं धारणा बनती है कि आओ अब ईश्वर की तरफ चलते हैं, ध्यान साधना करते हैं. फिर ध्यान शुरू होता है और फिर तीसरा जो अंतरंग योग है वह उसमें समाधि है, वह समाधि प्राप्त होती है. सामान्यतः लोगों के लिए ध्यान तक बहुत है. जिन्हें योगी बनना है उनके लिए समाधि की आवश्यकता है. लेकिन यदि आप एक अच्छा करियर चाहते हैं तो आपको कंसंट्रेशन चाहिए. आप एक अच्छा यानी कंसंट्रेशन ही
चित्त की चतुर्थ वृत्ति, तो आपको कंसंट्रेशन के बिना कोई बढ़िया काम करने का मौका जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। ना आप कर सकते हैं, अगर मिल भी जाएगा तो कर नहीं सकते। आप ना अच्छा लिख पढ़ सकते हैं, अच्छी गाड़ी भी नहीं चला सकते अगर आपका कंसंट्रेशन वीक है। तो कंसंट्रेशन इज की टू सक्सेस। और ये जैसे आप गहरी श्वास खींचकर उसको कुछ देर रोक कर बाहर यानी रेचक पूरा कुंभक करना शुरू करते हैं, फोकस हो जाते हैं ईश्वर प्राणिधान कि अब हम अपना कर्म कर रहे हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। ये दो भावनाएं जिसमें आती हैं उसका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा होता है। और जितना कंसंट्रेशन लेवल आपका अच्छा होगा उतनी मेमोरी अच्छी होगी। अब आप अपनी एकाग्रता का, कंसंट्रेशन लेवल का या अपनी मेमोरी का इस्तेमाल करियर प्राप्त करने में करें तो भी आप वहाँ कामयाब होंगे। आप सर की तरह रॉक क्लाइंबिंग करने में करें तो भी कामयाब होंगे, क्योंकि रॉक क्लाइंबिंग करते हुए यदि आप दाएं बाएं देखने लगे तो नीचे जरूर आएंगे, खूंटा लेके नीचे आएंगे, तो वहाँ भी आप कामयाब होंगे। आप बाइकिंग कर रहे हैं तो भी आप वहाँ कामयाब होंगे। और अपनी फैमिली में काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं, वहाँ भी कामयाब होंगे। ऑफिस में भी कामयाब होंगे, खाना पकाने में भी तभी कामयाब होंगे, नहीं तो नमक की जगह चीनी। तो इसीलिए ये दो चीजें योग सामान्य जन को बहुत बेनिफिट देता है और इसीलिए योग साधना अवश्य करनी चाहिए। मैं धीरन ऋषि के योग की चर्चा भी नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि वह सामान्यतः बाकी सब लोगों के लिए नहीं है। पहले आप जिस जीवन में आ गए हैं उस जीवन में पारंगत हो जाइए, और उसके लिए ऋषि पतंजलि की योग फिलॉसफी सबसे अच्छा है। मनुशुद्धि, मनोशुद्धि, वचन शुद्धि, ये तीनों जैसे ही पूर्ण होंगे आप दुनिया के हर जगह लीड करना शुरू करें। बहुत ही सुंदर। अहंकार से समर्पण की भावना की तरफ जाना, और अहंकार अगर हट जाए या क्रोध हट जाए तो हम मानव से ईश्वर की तरफ ही अष्टांग योग की जो बोला यम नियम पालन जरूर करना चाहिए। उसके बाद हम धारणा, ध्यान, समाधि पे जाएं। किरण सर, आप टीचर रह चुके हैं, हम लोग कई लोग टीचर हैं। आपने अपना करियर प्राइमरी टीचर के रूप से स्टार्ट किया है, बहुत सुंदर बात है। ये आप यंगस्टर्स को, हम लोग कई लोग बोलते हैं सर कि हमारे समय के टीचर अच्छे थे, अभी अच्छे नहीं बन रहे। ये सब लोगों की एक कंप्लेंट रहती है। तो हम लोग टीचर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, या बनने में क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है? आप यंगस्टर्स को क्या बोलना चाहेंगे सर? इज इट टीचिंग प्रोफेशन a good profession to be in? If there is a gap, Yes, it's working. If there is a gap between your passion and profession, obviously you're going to have problems. So if you're going to ask a question whether I should become a teacher or not become a teacher, that's a wrong question at all. If you love being a teacher, you will become a teacher. I ran away from home when I was 20. I went to Banaras by a train which I didn't know where it was going to stop, where I was supposed to get off, how much I was supposed to pay, what I was going to teach. So I wanted to be a teacher. So it's not a question of doing a cost-benefit analysis. If I become a teacher, what will happen? No. If you want to become a teacher, become a teacher. If you want to become an IT person, become an IT person. So the other question that we were discussing, I think yoga is called the right hand of God. Aghora is called the left hand of God. Whatever you practice, these are different paths, and combining what I learned in those 4 years talking to the students, I think there is a concept of psychosomatic constitution. That the moment sperm meets egg, that is the moment when that psychosomatic constitution is decided. In Ayurveda, it's called Prakriti. So you have Vata, Pitta, and Kapha Prakriti. People will follow the paths according to their Prakriti. So J. Krishnamurti was famous for talking about arriving at reality by questioning. Not everybody liked it. There were others who were driven by their gut. So if you are a Jnana Yoga person, you will follow that path.
If you're a bhakti yoga person, you say, I don't want this questioning, I have no patience for this. I would rather sit and do dhyan, or I will do bhajan. If you're a karma yogi, you will say, I want neither of this. I don't want to do bhajan, or I don't want to have this questioning. I just want to do things. Tell me, what can I do that is good for mankind? So there are multiple paths in the same way that you have multiple professions, and you will choose them according to that psychosomatic constitution, which by the way you cannot change. In Ayurveda they say that your prakriti changes only when you are close to death. You should know that that is when death is around. So whether you want to become a teacher or no is not a question of choosing a career. If you are passionate about it, you will love it. There is enough data to say how teachers affect children, because children are in their formative years. As I taught children from age 5 to age 12. They are all my friends in Nagpur. So this evening, several of them who are in Nagpur, while I taught in Nagpur, we are going to meet. Right? That is, now there is no teacher school, now we are friends. So that's the correct answer to should I become a teacher or should I not. That gap between passion and profession is an artificial gap. And when your passion becomes your profession, then it becomes a vacation. So we should always be on a vacation. So which brings us to another question कि हम लोग सक्सेस को डिफाइन कैसे करते हैं? हम लोग बोल रहे हैं we all want success, but what is it actually? What is success? Is it a good car? Is it a good salary or CTC or CGPA या फैमिली लाइफ या क्या सक्सेस आप डिफाइन कैसे करते हैं? जैसे IQ बोलते हैं हम लोग, IQ का रेंज है 1:10 कितना, EQ भी आजकल बोल रहे हैं, इमोशनल क्वोशेंट. तो हाँ जी, SQ भी बोलते हैं, HQ भी है क्या? कुछ हैप्पीनेस क्वोशेंट भी है क्या? हम कैसे डिफाइन करें अपने आप को कि हम हैप्पी हैं? राजन सर कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? What is the definition of success and how to quantify our happiness quotient? See, I would go beyond that. There is one book which every young person must read. Success is never ending and failure is not final. The moment you internalize this sentence, you will start understanding. The sentence itself gives you a message. Success is never ending and failure is not final. I am talking from the young people's perspective. दूसरा ये है कि success and failure are two sides of same coin. है ना? आज की तारीख में हमें बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट दिखती है, buy one get one free. होता है ना? तो buy one get one free means when you all the time want success, sometimes you are going to get failure. And therefore ये हमारे दिमाग से आप निकाल दीजिए कि हमें केवल उसी के पीछे भागना है. And therefore in Sarvasad Upanishad, when in one of the shlokas they are explaining about Panchakoshas, in Panchakoshas they are not talking about the success. जो पहला अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, वो सारे कोश जो है उसका सब में आखिरी वाला जो कोश है उसको वो आनंदमय कोश बोलते हैं. वो सुख के परे है, क्योंकि सुख के साथ दुख भी आ सकता है ना? So you will have to reach to that level, and if you want to reach to that level, then you will have to understand one thing very simple. If I ask you a question कि आप रोज सुबह क्या करते हैं? ऑफिस में जाने के पहले आप
नहाते हैं सब लोग, क्लीन करते हैं। आप वो पता नहीं पानी जब खत्म हो जाएगा क्या करेंगे, बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग फॉर दैट, लेकिन आप नहाते हैं ना रोज। लेकिन आप बाहर से नहाते हैं, अंदर से नहाते हैं क्या? नहीं नहाते ना। The moment internal cleansing also will happen, आप तो भूल गए ना कि अंदर भी क्लींसिंग होता है। जो योगा में पतंजलि ने कहा, पतंजलि को आपको केवल पहला सूत्र पढ़ लो, बाकी और उसको समझ लो और उसकी प्रैक्टिस करो, बाकी कुछ नहीं करना पड़ेगा। योगस्य चित्त वृत्त निरोधः। The moment you understand this, the moment you do cleansing, internal and external cleansing, and internal cleansing is more important. बाकी सारा जो है मार्केट में जो बेचा जा रहा है वो आपको कुछ नहीं मिलेगा unless and until, जैसे एक बहुत वाक्य वो है, ओशो ने एक वाक्य कहा है भगवान के बारे में कि हम कहते हैं कि हर कण में भगवान है। वो बोलते हैं ये इसको कोई मतलब नहीं है, हर कण भगवान है जब तुम समझ जाओगे, so then आप में परिवर्तन आ जाएगा। बहुत सुंदर उसने कहा। That is what I think that is answer to your question. बहुत सुंदर राजन सर। हर कण में भगवान है या हर कण ही भगवान है, और गीता में भी यही लिखा है कि हर लिविंग क्रीचर में, जड़ में, चेतन में, सब जगह प्रभु का वास है, या प्रभु ही है। शायद ये क्वेश्चन शायद प्रहलाद ने किया था कि खंबे में है क्या भगवान, तो प्रकट हो गए होंगे अपने रूप से नरसिंह अवतार में। शुड वी कंटिन्यू द सेशन या आप लोग कुछ पूछना चाहेंगे, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं? Yeah, the forum is now open for questions from the audience. You can raise your hands so that we can reach out the mics over there. Good afternoon, sir. It's really a pleasure to see you all and listen to your beautiful insights. And recently we have joined your Youth Awakening mission from all over the world. So I was so happy कि सिन्हा सर से मुलाकात हो सकती है, उनको सुनने मिल सकता है from offline, online to offline. Sir, my two questions are there. Sir, usually अभी हॉल पूरा 100% पैक है, so everyone is delighted कि full पैक है। अगर ये 50-50 होता तो it would have been कि थोड़ा सा कम है। Same way हमारे हिंदू फेस्टिवल्स, जैसा कि अभी मैं देखती हूँ रक्षाबंधन आज नहीं कल भी है। अच्छा तुम कब आओगे, आज आओगे कि कल आओगे, हम इस दिन सेलिब्रेट करेंगे। तो हिंदू फेस्टिवल अभी 2-2 दिन होता जा रहा है जैसे यूजुअली, और जिस हिसाब से अभी ट्रेंडिंग सेशंस हैं तो पीपल आर नॉट मोर डीपली कंसर्न अबाउट कि कब सेलिब्रेट करें, दे आर डूइंग अरे जब कंफर्टेबल है तब मनाएं। तो कब आना चाहिए रक्षाबंधन के लिए, आज या कल? So my and when I see the holiday list of my daughter, it's like ईद का decision end में दिया जाएगा कि ईद आज मनानी है कि कल। तो why not for our Hindu festivals कि एक फरमान बोले, कमान बोले कि रक्षाबंधन है, कोजागिरी है, पूर्णिमा है, this is going to be celebrated on this day instead of celebrating the joy 50-50. Why not 100%? That's very good question. वैसे जब हॉल 50% खाली होता है तो मैं अक्सर कहता हूँ कि बाहर इसका स्नैक्स बहुत अच्छे हैं। देखिए वो जो फेस्टिवल मनाया जाता है वो एक ही दिन का होता है, लेकिन चूंकि अब हम थोड़ा वेस्टर्न कल्चर की ओर चले गए हैं तो इस वजह से ये हम तिथियों को समझ नहीं पाते। हमारे यहाँ फेस्टिवल शुरू होता है पर्टिकुलर तिथि से, एक तिथि जब वो पूरी हो जाती है तो फिर अगला दिन शुरू होता है। तो फेस्टिवल एक ही दिन का होता है लेकिन वो तिथि के अनुसार होता है। तो इसलिए ये कंफ्यूजन होता है क्योंकि हम ये सोचते हैं कि रात 12 बजे डेट चेंज हो जाती है, तो रात 12 बजे डेट तो चेंज होती है, तिथि नहीं। फेस्टिवल्स मनते हैं इंडियन कल्चर के हिसाब से, जो भारतीय संस्कृति है उस हिसाब से
कैलकुलेशन हम करते हैं वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से, रात के 12 बजे AM PM, तो इस वजह से वो कंफ्यूजन है, अदरवाइज सब सेम है। इस्लामिक कल्चर में भी वही चांद की डेट्स फॉलो करते हैं जो हिंदू कल्चर में करते हैं, बस उसमें ये होता है जब शाम को चांद दिख जाता है ऊपर, तो वहाँ से काजी साहब या मौलवी साहब तस्दीक करते हैं कि अब आप ईद मना सकते हैं क्योंकि चांद दिख गया। तो हमारे यहाँ भी ऐसे होता है, करवा चौथ है ना, अहोई अष्टमी, चांद दिख गया, अब से मनाना हम शुरू करते हैं। तो इसी प्रकार दोनों चीजें सेम है, लेकिन चूंकि वो 12 बजे वाली सुई अटक जाती है हमारी, उसके बाद एम शुरू हो जाता है, इसलिए हमें 2 दिन वो समझ में आते हैं, अदरवाइज है एक ही दिन, और लेस देन 24 आवर्स एक दिन का समय होता है, वो उतने ही होता है। The next question, please. नमस्ते सर सभी, मेरा नाम विश्वेश्वर नाग है। मेरा ये सवाल है जो सर ने बताया है कि हर घर में ईश्वर है, भगवान। तो अगर हर घर में ईश्वर है तो फिर हमें वो रियलाइजेशन कैसे होगा, मतलब एक्सपीरियंस कैसे करेंगे? एंड सेकंड ये है कि फिर भेदभाव नहीं होना चाहिए, हर एक को समानता देखना है। तो आज की डेट में हम सोसाइटी में कहीं भी देखते हैं, तो फैमिली में भी देखते हैं या बाहर देखते हैं। फैमिली में हो गया तो पापा अपने बेटे को डांट रहा है, बेटा भी उल्टा जवाब दे रहा है, वाइस वर्सा मतलब स्कूल कॉलेज में भी टीचर डांट रहे हैं और बच्चे भी उल्टे जवाब दे रहे हैं। तो हर अगर अपन ईश्वर घर में है तो मेरा यही है कि तो फिर वो रियलाइजेशन आना चाहिए फिर समवेयर डाउन द लाइन कि मैं किसी को फिर गुस्सा नहीं करूंगा या कुछ उल्टा सीधा बोलूंगा नहीं। ये मेरा सवाल है कि फिर वो रियलाइजेशन कैसे आएगा कि हम हर एक को समानता दें। यही मेरा कुछ के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तो खुद की बॉडी को कंपेयर करो। बहुत सारे सेल्स है आपके बॉडी में, कोऑर्डिनेशन से काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगा ना। तो कोऑर्डिनेशन तो होना पड़ेगा इसका। तो तुम्हारे बॉडी में जो हो रहा है उसी का उदाहरण ले लो आप, कि आप कोई भी सेल को, जैसे आप खाते हैं, आप फिजियोलॉजी अगर पढ़ेंगे और नोबेल लॉरेट्स का ये पढ़ेंगे तो उसका साइंस है उसके पीछे। यू डोंट हैव टू गो आउट, द एंटायर फिलॉसफी ऑफ योर लाइफ इज विद इन योर ओन बॉडी एंड they have to work together. For example, आपके हाथ पाँव अलग अलग काट के रख दिए, आपके हैं, I'm just giving an example, anecdote. हाँ, so आप काम करेंगे क्या वो? लेकिन वो एक साथ है ना, कन्वर्जेंस है उसमें एक, है ना? अब वो कन्वर्जेंस जो है, जब आप उसको समझेंगे जो हमारे बॉडी में हो रहा है, the same thing, society is nothing, वो सारे जो सेल्स तुम्हारे हैं ना, सब वो ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल से जो बाहर दुनिया में हमें दिखते हैं, वो सब वही है। अब उसको आप समझिए, और वो आपको कैसे समझेगा? The moment your mind and your practices become spiritual, and therefore इसमें religion ऐसा शब्द नहीं यूज किया है। करियर में भी जो थर्ड वर्ड यूज किया है कि करियर, ये सारे चीजें एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। The first word in the topic is spirituality. The second is mindset and not handset. Handset तो बदलते रहते हैं, आप mindset ही नहीं बदलते। कुछ नया आ गया कि पूरा बदल देते हैं। To change that mindset, you need spiritual bent of your mind. You should do practices and then understand how your cells of your body is working concurrently, convergently with total integration. और आखिरी में just 30 सेकेंड में मैं बोलूँगा, there are two words, reaction and response.
हम सारे के सारे लोग रिएक्शनरी हैं और इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। रिस्पॉन्स में ऐसा नहीं होता है। रिएक्शन में somebody acts and you react, means you are losing the control of yourself and giving control to somebody. जब ये होता है तब सारे के सारे प्रश्न निर्माण होते हैं और उसका कारण एक है ईगो, अहंकार जो अंधकार होता है। That is what I think. बहुत अहंकार अगर क्रोध अहंकार हट जाए तो हम तो जो महावाक्य हमारे शास्त्रों में है अहम ब्रह्मास्मि, तो कण कण में प्रभु या प्रभु ही कण कण में है या कण कण ही है, तो यही शायद कहना चाह रहे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही प्रभु हूँ। तो जब हम ही प्रभु हैं और आप भी प्रभु हो तो फिर द्वैत कैसा? ये तो अद्वैत है, आप और मैं एक ही है, तो नाराज होंगे किस पे? आप अपने आप पे तो नाराज नहीं हो सकते हैं, तो हम दोनों एक ही हैं। प्लीज आपके पास माइक है। So my question is that, like, as we are on the path of spiritual journey, like we started chanting, so there are various distractions. Like in my way, like when I started chanting, when I do the chanting, there are various thoughts in mind. How to stop them? Like for a second, we can concentrate at that point, but after some time, we get distracted. Other things are coming into our mind. How to control that? I just want to ask that. Thank you. किरण सर आप बोलना चाहें? So, your mind trying to control your mind is like standing in a bucket and picking yourself up. Is it possible? So, what will happen? Sorry? Yeah, so it's like standing in a bucket and trying to pick yourself up. So, one part of the mind can't work on that. So, if you take what Sir said about reaction and response, what is involved between reaction and response is time. Do you watch cricket matches? Yes? When the umpire has to make a decision, what does he do? What does he do? No. What does he do on television when an umpire, there is a third referee who is asked, what happens then? What does he do? Anybody else? One is close. What is the other thing? He watches it all in slow motion. Okay? So if you are sitting down and looking at what is happening inside, if you are able to watch in slow motion, rather than say, I want to control it, you cannot control it because you are standing in that bucket. So observation is the only act of the human mind that does not have a reaction. Everything else will have a reaction. And like he said, if you have a reaction, you are going further and further away from yourself. So the answer is observation. You sit. If during chanting thoughts are coming, watch the thoughts come, watch them, rather than try to control them, because you can't control them. Yeah? Thank you. Namaskar, Madam Sir. Very interesting to listen to your points and also to the question answers. So I absolutely agree with what you have to say, and about spirituality and all the points. I can't start naming them now. But my point is this: you are the learned ones, okay? But we have such a big population that needs to know. So how do we change the mindset of the people? This is something that you are telling us now. Maybe there are about 100 people sitting in this hall, and we take back some message with you. But we have such a huge population. Everybody is moving towards unrest, especially the younger generation these days. It's all, they are so social media oriented. They are not, there are a lot of drawbacks also. So how do you change that population? How do you reach out to them and help them to look inside within themselves? It's a wonderful question, and I would like to answer it with a quotation given by my Guru Maharaj. Somebody asked the same question to him, that I want to correct the world. That's why I'm into spirituality.
So Guru Maharaj, Swami Ramakrishna Paramahansa said that you are too small and the world is very large. Do you really think that in one time, in one life, can you change it? He was aghast at it and he had to admit that he cannot do it. So then Guru Maharaj says that you change yourself. Gradually, I too, initially, I since in the beginning, like every youth, I too was embedded with a lot of enthusiasm, and I also said that I'll change the world. Now I'm into spirituality, I'm sitting in the forest, I'll gain some cities and change the world. But gradually I came to know that it's not possible at all. What to talk about the world, I cannot change my parents. So then I started changing myself. And world is changed not through the instructions but through the demonstration. So I thought, see, in the beginning you said learned people are sitting. So yes, these three learned people are sitting. We exclude me from them. Because when I was learning, like I'm also learning now also, nothing has changed much. So I started developing, or I thought to start developing certain qualities, certain virtues, so that I could imbibe in me and work accordingly. Now it depends upon the world, and here I must believe in societies. So if they see me working and they join me in my working, it is through the demonstration that they may get some kind of change. But otherwise it is impossible. Second example I would like to give from Swami Vivekananda. He was a man of virtues, and if you read his brain, his thought, his minds and ideas, you will find that he had a finer brain than Einstein. But unfortunately, since he was an Indian, and that too of a colonial period Indian, so his name was not included there as we talk about Einstein. But he roamed throughout the world, and he always spoke just two things. One, what my Guru Maharaj taught me, and the second, what is written in Indian scripture, and this was to show the beauty and the power of Indian culture. So just two things he spoke. He never said that you have to change yourself. He just manifested these two things to the world, and they started changing because they found that this person, what he's saying, he's also demonstrating it. And that is why there will be something good. For example, if you say, the people like me cladding in this color may not leave that impact as you may. When you go to the youth, or when you address a society which is now much westernized, then when they listen to you, when they listen to your words, your thoughts, and they would say, my God, when she is speaking, that means there will be some truth. So they would start changing. So that you have brought, the changes you have brought through your own demonstration. So what I believe is, number one, I cannot change the world. Number two, that is not my objective either. And number three, world cannot be changed by the instructions. And number four, world may be changed by demonstration. Yeah, I would like to add see, of course, unless and until you change yourself and you believe yourself,
you trust yourself. That is the first criteria. You will not be able to bring change in others. But bringing change in others can happen only through creation of environment. What kind of environment you are creating around you, that really will help changing people. दूसरा सीधा उदाहरण है, एक कुश्ती में हमें ओलंपिक में मेडल कौन से प्रदेश से लोग आते हैं? हरियाणा से ज्यादा, बराबर है? क्यों हरियाणा से लाते हैं? क्योंकि वहाँ एक एनवायरनमेंट बनाया है, एनवायरनमेंट बन गया। हॉकी के प्लेयर्स वहाँ से आते, पंजाब से, एनडीए एरिया से, क्यों? क्योंकि वहाँ एक एनवायरनमेंट बनाया है। So what we need to do is, don't try to change somebody, but try to create an environment. जैसे आप टेंपल में जाते हैं, शांति महसूस करते हैं, घर में आते हैं तो फिर वही chaos है। क्यों हो रहा है वो? क्योंकि वहाँ एक environment क्रिएट किया है। इन्हें लाइटर वेन मैं बताता हूँ, मैं लंदन में था और यहाँ रामनवमी हो रही थी, तो प्रभु राम जी मुझे वहाँ मिले मार्केट में। मैं बोला अरे वहाँ तो रामनवमी हो रही पूरी भारत में, आप यहाँ कैसे हैं? तो बोले मैं क्या करूँ, मैं इतना तंग आ गया हूँ ये सब लोगों से, तो मैंने सोचा कि चलो लंदन घूम आते हैं। इतना सुंदर डिस्कशन हो रहा है, ऐसा लग रहा है और 1 घंटा भी कम पड़ेगा, पर वो पीछे भारत दाभोलकर साहब बैठे हुए हैं, आशुतोष जी बैठे हुए हैं, शायद अगला सेशन हमें इनका सुनना है।